Hello children, welcome back again. In this session and video, I have brought some important questions for all of you of the chapter number 1, Chemical Reactions and Equation of your science book NCERT. Okay, and these questions, children, they are very important and they may come in board exams. They are important board questions, you can say, and you must be knowing about all these questions. So I am going to discuss about all these questions. Kindly see the whole video. Okay, now question number 1, I'm going to discuss question number 1. A iron knife dipped in a blue copper sulfate solution turns blue solution light green. Why? अब आप देख सकते हैं बच्चों कि ये जो क्वेश्चंस हैं मेनली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं. थिंकिंग, यू हैव टू रीजनिंग एंड थिंकिंग, यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल दिस क्वेश्चन. सो आप उस क्वेश्चंस पे फोकस करिए जिसमें आप थिंक करते हैं, आप रीजनिंग करते हैं, देन ओनली दैट विल हेल्प यू. Okay, so to crack the board questions and to get good marks in science, like iron knife, iron, you know iron, okay, then it is dipped in blue copper sulfate solution, तो blue color जो होता है वो light green हो जाता है. And question is why? Now, as I have told you in my previous videos that iron is much reactive than copper. Okay, so when what iron will do, this reaction I have written here, you can see this. Iron react with copper sulfate solution which is blue in color and it will displace and form ferrous sulfate solution plus copper. मतलब जब वो ferrous sulfate बना देता है रिएक्शन करके तो वो कौन सा कलर का होता है? लाइट ग्रीन. सो दिस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन थोड़े देर बाद लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है. तो दिस इज द आंसर विच आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग मेटल एक वीक मेटल को डिस्प्लेस करता है. तो दिस ऑल इज गोइंग ऑन बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दिस होल क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. चिल्ड्रन, आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग. एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्टिविटी सीरीज भी होता है. दिस रिएक्टिविटी सीरीज यू मस्ट नो, आपको इसको मेमोराइज करना पड़ेगा, इन विच इट इज़ गिवन दैट हाउ जो स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं वो वीक मेटल्स को रिप्लेस करते हैं, उसको डिस्प्लेस करके खुद उसकी पोजीशन पे चले जाते हैं. तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज. ओके, तो आई होप दिस क्वेश्चन नंबर 1 is clear. Now I am moving to question number 2. What is rancidity and how can you prevent it? This is a very simple question, straightforward, direct question. Okay, it has not been twisted. Only the rancidity and the methods to prevent it. Now, as I have told you, what is rancidity? The phenomena of oxidation of oil and fat present in the food items is known as rancidity. And prevention also मैंने अपने previous videos में आपको बताई है. जैसे prevent कैसे कर सकते हैं? By using of antioxidant, by storing in airtight containers, by filling nitrogen gases, by using antioxidants. All this I have told you already in my previous video. So this is a very simple question. So this type of questions also we get in the board exams. Now question number 3. Why are decomposition reactions called opposite of combination reaction? This is also straightforward question, very direct. I have given in my old video decomposition reaction as well as combination. तो as the word suggest, word से पता चल रहा है आपको decompose मतलब breakdown होना, combination मतलब join होना, तो दोनों एक दूसरे के opposite हैं. And in many reactions also I have given in my video. So please, if you want the answer of this question, go through that video. Okay, fine. Now children, I move to question number 4, that is give reasons. Give reason means it is a reasoning question and this is one of the important question. I mark a star here, okay, because this is important. Mostly we get this type of questions. Now the number A, silver metal does not show any change when react with dilute HCl. Now why it does not react? Because as you all know, silver, gold, all are inert elements. They are not reactive. So when they react with dilute HCl, they do not show any reaction. This is the answer for this question. Silver is inert. It is unreactive. It is given down in the reactivity. अगर जब reactivity series आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि silver जो है वो काफ़ी नीचे है after hydrogen. So it is unreactive, so does not react with dilute HCl. Dilute HCl से react नहीं करता है. Number B, sodium metal is found to be highly explosive. Now, why it is very explosive? Because sodium is highly reactive और ये
रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज होती है। तो सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। सो सोडियम ऐसा है चिल्ड्रन, आई वांट टू टेल यू कि सोडियम मेटल इज केप्ट इन kerosene. Why? Because the moment it is taken out, it react with the air at normal temperature only and catches fire. Okay, so sodium is highly reactive, so that's why it is found to be highly explosive. So this is the answer for this question. Now I move to question number 5. This is also a tricky question children. As you can see, it is given indirectly. So आप ज़्यादा कोशिश करो कि आप जो indirect questions जो बहुत सारी books like अरिहंत है, प्रदीप है, many refreshers are there for 10th class, आप उसको refer करिए जिसमें questions दिए गए हैं as well as the answers, and then you'll be able to get very good marks in science. A substance X, which is an oxide of group 2 element, is used in cement industry. These keywords should be kept in mind children. X, cement industry. This element is present in bones also. Remember, bones. On reaction with water, it forms solution which turns red litmus blue. Identify X and write the chemical reaction involved. Now, if you don't understand children, read the question 2 times. Okay, so you'll be able to understand. A substance X, अब आपको इस क्वेश्चन में ये बताना कि X है क्या, और ये ऑक्साइड है ग्रुप सेकेंड एलिमेंट। ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल में आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल। अगर नहीं पढ़ा है तो पीरियोडिक टेबल को लर्न करिए, उसको अच्छे से पढ़िए। यू शुड नो द एलिमेंट्स। पीरियोडिक सेकेंड ग्रुप एलिमेंट में, सेकेंड ग्रुप में ये एलिमेंट सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, ये सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, ये प्रेजेंट है बोन्स में। सो दैट इज कैल्शियम। इट क्लिक्ड इन माई माइंड। मैं कैसे सोच रही हूँ कि बोन्स में प्रेजेंट है, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, तो ये क्या हो सकता है, कैल्शियम। ओके, सो आई हैव रिटन कैल्शियम। कैल्शियम इज द एलिमेंट. What is X? Calcium. Now this calcium, on reaction with water, it forms solution which turns red litmus blue. Okay, so this calcium will react with oxide of group 2. ऑक्साइड मतलब हमें एक ऑक्साइड बनाना है, तो becomes calcium oxide, which is also known as quicklime. This quicklime, when react with water, it forms calcium hydroxide and heat is given out. Now which turns red litmus blue? This line children, I am underlining this line. What does this mean? That means it turned red litmus blue. That means इसका मतलब कि वो बेसिक है कैरेक्टर में, क्योंकि you all know कि जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं. सो दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड द केमिकल रिएक्शन ऑल्सो आपको लिखना पड़ेगा. तो मैंने यहाँ कैल्शियम इज द एक्स एंड ऑक्साइड हो गया. ऑक्साइड इज कैल्शियम ऑक्साइड. दिस कैल्शियम ऑक्साइड को मैं H2O से रिएक्ट करूंगी तो ये फॉर्म करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट इज गिवन आउट. एंड दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिकॉज इट इज बेसिक इन कैरेक्टर, टर्न्स रेड लिटमस blue. Okay, this is all for today's session children. In my next video again I'll take some more questions, some important questions which you must know. Thank you for watching. I hope you like the video, so kindly share and subscribe.